So now students, after exercise 7th B, we will understand adding and subtraction like fractions. So यहाँ हम स्टूडेंट्स समझेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना लाइक फ्रैक्शंस को. सो सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर्स. यानी हम डिनोमिनेटर सेम हम ऐसे ही लिखते हैं कॉमन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में हम लिखते हैं सम ऑफ न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर्स का हम सम कर देते हैं. ऐसी डिफरेंस में हम डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर्स. एग्जांपल के लिए 15/32 प्लस 9/32, इन दोनों को प्लस करना है. ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. तो हम 15/32 प्लस 9/32 को सम ऑफ न्यूमरेटर्स का सम करेंगे ओनली. 15 प्लस 9 और कॉमन डिनोमिनेटर यानी 32. 15 प्लस 9 हुए हमारे 24 एंड देन 32, और हम इसे रिड्यूस कर लेंगे 24/32 को. 8 से डिवाइड करेंगे दोनों को. 8 3 जा 24, 8 4 जा 32. सो आंसर विल बी 3/4. ऐसे ही अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर बनाएंगे, देन टू फ्रैक्शन हो चाहे 3 फ्रैक्शन हो, हम सम ऑफ द फ्रैक्शन करेंगे और कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे उसके नीचे, देन प्लस करेंगे. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7C. सो टेक आउट योर मैथ रजिस्टर एंड वी विल डू एक्सरसाइज 7C. सो एक्सरसाइज 7C, question 1 2 3 4 we will do add. So we will write the exercise 7C as heading, then add first A 2/7 plus 3/7. So sum of numerator upon common denominator. Sum of numerator 2 plus 3/7. 2 and 3 5/7. This is the answer. Now question B 4/15 plus 8/15. So these are the like fractions. So we will write sum of numerator upon common denominator. So 4 plus 8/15. 4 and 8 12. 12/15. अब हम 12/15 को स्टूडेंट रिड्यूस कर सकते हैं. सो हम 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे. 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15. 4/5 विल बी द आंसर. नाउ क्वेश्चन C 4/13 प्लस 6/13. Sum of numerator upon common denominator. 4 plus 6/13. It will be 10/13. Now question D 7/24 plus 5/24. So sum of numerator 7 plus 5 upon common denominator. 7 and 5 equals to 12/24. Now we will divide it by 12 in both numerator and denominator. So it will be 1/2 answer. Now student, question number 2 you will do yourself. Now we will do question number 3. Question number 3A is 1 whole 3/8 plus 2 whole 1/8. In this question we will add of these mixed fractions. So we will convert into first improper fraction. 8 1 ja 8 and 3 11/8 plus 8 2 ja 16 and 1 17/8. Now sum of numerator upon common denominator. 11 plus 17/8. 11 and 17 28/8. Now we will divide it by 2. 2 14 ja 28, 2 4 ja 8. Now again we will divide it by 2. 2 7 ja 14 and 2 2 ja 4. Now the 7/2 answer. Now 7/2 we will convert into mixed fraction because question is given mixed fraction. So answer we will write in mixed fraction. So 2 का डिवाइड हम 7 में करेंगे मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए. 2 3 जा 6 and 1 is the remainder and 2 is the denominator as divisor. So 3 whole 1/2 as the answer. Now question number B 5/6 plus 3 whole 1/6. So 5/6 plus 6 3 ja 18 and 1 19/6. So sum of numerator upon common denominator. 5 plus 19/6 equals to 24/6. It will be 4 answer. Now question C 5 whole 7/8 plus 3/8.
So 8 5 is 40 and 7, 47 upon 8 plus 3 upon 8. Sum of numerator plus sum of numerator upon common denominator. So 47 plus 3 upon 8, 50 upon 8. Now we will divide it by 2, 25 upon 4. So answer will be 25 upon 4 answer. Now question D, 19 upon 80 plus 4 whole 18, 11 upon 80. So it will be 19 upon 80 plus 84 is 320 and plus 11 331 upon 80. So sum of numerator upon common denominator, 19 plus 331 upon 80. So it will be 350 upon 80. Now we will divide it by 2, 175 and 40. Now again we will divide it by 5. 5 35 is 175, 5 8 is 40. So 35 upon 8 is the answer. Now question number 4. Subtract. Difference of like fractions. So part question A of question 4 is 8 upon 15 minus 2 upon 15. So sum of difference of numerator upon common denominator. So 8 minus 2 upon 15, it will be 6 upon 15. Now we will divide it by 3. 3 2 is 6 and 3 5 is 15. So 2 upon 5 is the answer. Now question B, 19 upon 75 minus 7 upon 75 equals to 19 minus 7 upon 75. It will be 12 upon 75. Now we will divide it by 3. 3 4 is 12 and 3 25 is 75. So 4 upon 25 is the answer. Now question number C, 2 whole 4 upon 9 minus 7 upon 9. So 9 2 is 18 and 4, 22 upon 9 minus 7 upon 9. Now difference of numerator upon common denominator, 22 minus 7 upon 9. So it will be 15 upon 9. Now we will divide it by 3. 3 5 is 15 and 3 3 is 9. So 5 upon 3 is the answer. Now question D, 10 whole 5 upon 18 minus 5 whole 7 upon 18. So first we will convert into improper fraction. 18 10 is 180 and 5 185 upon 18 minus 18 5 is 90 and 7 97 upon 18. Now difference of numerator upon common denominator, 185 minus 97 upon 18. So it will be 88 upon 18. Now we will divide it by 2, 44 upon 9. So 44 upon 9 we will convert into mixed fraction. So 9 4 is 36 and 8 as remainder and 9 as divisor. So 4 whole 8 upon 9 is the answer. Now students, after question 4, question 5 and question 6 you will do add. So question number 5 and question number 6 you will do yourself. Thank you.